So well, now let's discuss some more topics. So अब हमारे पास है estimate of sigma square. The sigma square, I mean the variance of y. Estimate of sigma square. This will be helpful. सिग्मा स्क्वायर का एस्टीमेट जो है ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए जब हम आगे इसको डिस्कशन को लेकर चलेंगे. तो पहले तो what do we mean by sigma square? So sigma square is basically हमने कहा था कि sigma square is variance of error, लेकिन ये variance of error जो है वो बराबर होती है variance of y के. तो basically you can say that it's the variance of y. So now I'll define the term called mean square error. Mean square error. With the help of this mean square error, I'll be in the position to define estimate of sigma square. जब हम ये mean square error define कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर जो है वो define कर लेंगे estimate of sigma square easily. Basically ये estimate of error ही है, आप ऐसे समझे. estimate of sigma square है ये, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s स्क्वायर से. सो ये बेसिकली मीन स्क्वायर एरर जो है आपका एस्टीमेट है सिग्मा स्क्वायर की एस्टीमेट का, और इसको आप डिफाइन करते हैं ये बराबर होता है MSE के मीन स्क्वायर एरर के, और ये फाइंड किया जाता है SSE यानी SSE divided by n minus 2. And what was SSE? We have recently seen that it is the sum of squares due to error. So S square can be found with this. So इसके बाद फिर आप standard error of estimate भी find कर सकते हैं. Standard error of the estimate, and this can be found out by S is equal to square root of MSE, which is same as square root of SSE divided by n minus 2. ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा S को फाइंड करने के लिए, और S स्क्वायर आपका फार्मूला बन जाएगा फॉर द estimate of sigma square, or S is basically the estimate of sigma. So these will be helpful in the upcoming discussion. For example, हमने जो एग्जांपल किया था आर्म्स पिज्जा वाला, इसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो SSE है वो बराबर आ रहा था 1530 यानी 1530. n जो है वो डेटा पॉइंट्स थे वो आपके बराबर थे 10 के. तो इस केस में आपका जो S स्क्वायर या MSE है यानी एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, या जिसको आप मीन स्क्वायर एरर भी कहते हैं, वो बराबर हो जाएगा SSE divided by n minus 2 यानी 1530 divided by 8. When you divide this, you will get 191.25. और फिर इसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर यानी S जो है वो आपका बराबर हो जाएगा 191.25, which is equal to 13.829. This S is going to be important in the upcoming discussions. So let's start new topic